दोस्तों यह है इन्फिनिक्स नोट 50S 5G। आज हम इसमें BGMI टेस्टिंग करने वाले हैं दोस्तों। हाई ग्राफिक पे 90 FPS पे हम BGMI टेस्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस मोबाइल को लिए हुए 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने के बाद ये मोबाइल कैसा परफॉर्मेंस देता है BGMI में, आज हम सब कुछ टेस्ट करेंगे दोस्तों आपके सामने, और आपको दिखाएंगे ये मोबाइल BGMI में कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। दोस्तों मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है, इसलिए ये ओपन होने में थोड़ी देर लगा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे मोबाइल में BGMI ऑन हो गया है। सबसे पहले हम ग्राफिक्स और सेटिंग दिखाएंगे आपको दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, स्मूथ पर एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन है दोस्तों, मतलब कि 90 FPS। यहाँ पर हम TDM लगा लेते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके यहाँ पे लगा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सके दोस्तों। World and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. देखो दोस्तों, ये जायरो बिल्कुल मस्त अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। Team match, let's go. There's an ambush. Play it safe. Cover me. Down. Reloading.
Reloading. Spree for the blue team! Killing spree for the red team! Mercy. Reloading. Cover me. Blue team doesn't have a lot of time left. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गेम पूरा हो गया है। मैंने आईडी चेंज कर ली थी क्योंकि मेरी जो रियल आईडी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रो बंदे आते हैं और मैं ठीक से खेल नहीं पाता, इसलिए आईडी चेंज कर ली थी। और दोस्तों ये मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होने की वजह से थोड़ा बहुत लैग होता था और फ्रेम ड्रॉप कभी-कभी देखने को मिलते थे, लेकिन नॉर्मल खेलने से बहुत बढ़िया गेम चलता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।